Basudebur blocks. I am completed B.Ed and also graduation in chemistry honors. Okay, sir. Chalo, good. Thank you. Next. Biswanta. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. My name is Subhadra. I belong to Noida district. I do my graduation in BSc Biotechnology and Utkal University, Bani Bihar, Bhubaneswar. अरे वाह बढ़िया. Next. I am BD and continue in Nagarjuna University, Guntur and first year, ma'am. अच्छा ठीक अच्छी. Next. Mona Lisa. Hello, sir and ma'am. I'm Mona Lisa Halia. I'm from Jandipur, and now I'm studying in MSc first year University. चलो good. Thank you. कोरापुट मालकानगिरी नबरंगपुर के नाती. अरे के अछन्ती सब मालकानगिरी के अछ मालकानगिरी कोरापुट के अछ कोरापुट मालकानगिरी नबरंगपुर साउथ रो केही नांती बुदे ताले हमरो सुंदरगढ़ से कहले ना राउरकेला हां ये अच्छी रायगढ़ चलो गुड ठीक अच्छी सो विल स्टार्ट नाउ वेट करिया ना स्टार्ट कर दो पहले जॉइन करन दो स्टार्ट समस्त मु 10 o'clock रखी छी इतपई जस्ट बिकॉज़ डिनर ओवर ही जाइथिबो कि एनवायरनमेंट को समस्त इग्नोर कर दियंती आमे माने भी इग्नोर करि दोथुलु ओपीएससी रेते किछि आसनत लाइक इकोलॉजी एनवायरनमेंट रु बट राइट नाउ से जेमति ता पैटर्न बने दलानी GS3 इकोनॉमी इकोलॉजी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक इकोनॉमी रे आंसर समस्त सेमती लेखिकी सेमती भलो मार्क्स आनी परिबे कि नाही सेटार मु श्योर हे पनी का ना मु भी कॉन्फिडेंट होजे सेतरे बेसी मार्क फेचिंग रहइबो साइंस एंड टेक को पार्ट हमको जाना थिबो को पार्ट जाना नथिबो बट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को हमको फोकस करिया को पड़िबो बिकॉज़ एटा हम पे मार्क फेचिंग हे पारे समस्त इग्नोर कर दियंती एनवायरनमेंट ऊपर कोन टिके पड़िले खाली हम सराउंडिंग देखिकी हमें छाड़ दोचे एटा तो मार्क अचीव हमें सेठी करि परियानी ना so we need to focus on ecology and environment okay so we'll start Something visible hochi screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. अच्छा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आगुरु केते जना पढी चंती क्लास को आई मीन हमरो ग्रेजुएशन टाइम रे भी बुदे गोटे पेपर थिबो Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड ईयर रे या सेकंड ईयर रे गोटे पेपर रहि जाइथिबो सेटा जस्ट पास आबा को समस्त पढिथिबे एज सच नॉलेज यदि सीबीएसई स्कूल छुआ इथिबे ताले 12th रे गोटे चैप्टर दीटा चैप्टर थिला राइट Yes, ma'am. Okay. So we'll start with environment and ecology. More sessions रा गोटे format रहिबो मु basic first किछि basic definitions तापरे गोटे concept तापरे गोटे event माने हमर अर्थ डे हो environment डे हो every session रे गोटे event major event गोटे cover करिबी तापरे गोटे convention conference convention या जोटा भी गोटे cover हबो गोटे animal in news cover हबो हैला एमती करिकरी ही मो सेशन को कंप्लीट करी पूरा एब्सोल्युटली चैप्टर 1 रु मो स्टार्ट करिकी गोटे दिन चैप्टर 1 गोटे दिन चैप्टर 2 से बही हिसाब रे मु पढिबा प्रेफर करेनी कि मु कहेनी भी काको सेमती पढो नले रिवीजन कला अलगु समस्त हमें फर्स्ट पेज रु 10th पेज भीतर हम रिवीजन रो पूरा एंथु पढै थिबो हमें फर्दर आउ करि परिबा जदि हम पार्ट सेग्रीगेटेड करिकी करबा तो हमें ओवरऑल बुक को एग्जाम पूर्वरु देखि परिबा Is it okay for everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोडी किछि प्रॉब्लम हनी मते कहबो क्लास सरीला पर जदी किछि प्रॉब्लम अछि एमती सेशन रो फॉर्मेट रे या मते आ कोन ऐड ऑन करियार अछि या किछि मते रिड्यूस करिकरी कोन करियार अछि कहिले मु से आंसर रे नेक्स्ट सेशंस करा को से आंसर रे ऑप्टिमाइज करबी ओके सो विल स्टार्ट
So the basic definitions to start kariba. Ecology consists of two words, that is your oikos and logos. Oikos ra meaning home or place to live in, and logos means study, and it was termed by Ernst Haeckel. Eta most important, eta amti bele bele majre majre padiche ditin thara I guess previous year questions re, seta mane rakhithao. Next, ecology is defined as the scientific study of relationship of the living organisms with each other and with their environment. Kahaku kichi problem? No, ma'am. No. Okay. An environment, what is an environment? Environment is the sum total of living and non-living components, influences, events surrounding an organism. Say influences, events, चाहे food chain हो, हमारा water cycles हो, pollutions हो, कोई भी kind of environmental events हो, सबको को include करिकिरी गोटे environment को हमें consider करूचे. Next, the relationship and interaction between organism and environment are highly complex. जेमती हमारा फूड चेन बहुत सारा फूड चेन लगी कि फूड वेब सेमती ए रिलेशनशिप ऑफ इंटरेक्शंस बराका बहुत ही कॉम्प्लेक्स. It comprises both living, that is biotic, non-living, abiotic components. मते के कहि परिबे biotic components रा example? Yeah, ma'am. Producer, consumer, and decomposition. Biotic means living thing. Biotic includes living, हाँ. In abiotic? And abiotic means non-living, ma'am. Non-living. air, water, Non-living. Air, water, soil. air, water, wind, sun rays. Ma'am, biotic is producer, consumer, and decomposition. Good. Biotic माने bio word लागुची, so life अच्छी. Abiotic life नहीं. Simple. तेतरे जहारा life नहीं सेगरा का abiotic, जहारा life अच्छी सेगरा का biotic. Simple. तापरे हमारा असला ecosystem. Okay, so ecosystem is defined as a structural and functional unit of biosphere consisting of community of living beings and physical environment, both interacting and exchanging materials between them. इटा को ए डेफिनेशन था ना पूरा स्ट्रेट मुंडरे फिक्स कर दबार अछि. याटू याडू साडू किछि लेखिबार नाही एग्जाम रे. प्री रे तमे माने गेस करि परिबो कोटा भी ठीक है परिबो, बट मेंस पेपर रे जते बेले आसीबो गोटे क्वेश्चन एठी त मार्क जमा भी माने छाडियार ना. एटा पूरा लिखि दबार अछि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. Okay, so components of ecosystem and the components of the components kona ecosystem of environment ro component same, say abiotic and biotic. Environment गोटे बहुत ही बड़ा सिस्टम, ता भीतर गोटे सबसेट होची इकोसिस्टम. ओके, तापरे बायोस्फीयर is a part of the earth where life can exist. Biosphere represents highly integrated and interacting zone comprising of atmosphere, hydrosphere and lithosphere. So this goes like this. हमें गोटे वेन डायग्राम हमें सब छोटो शिखीचे. एटा जदि तमर हला lithosphere, hydrosphere and your atmosphere, this space पूरा सबु मझी रे जोटा थिबो सेटा हला तमर बायोस्फीयर. Okay, next we have types of ecosystem. What a natural ecosystem, what a artificial ecosystem. Natural ecosystem, your terrestrial ecosystem, grassland, forest ecosystem and desert ecosystem. Aquatic, fresh, marine ecosystem. Everyone समझते अच्छा ना? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. अच्छा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रे कोन आसीबो हमें जते बळे जो ग्रीन हाउस ये प्रोडक्शन ये जो करू छे प्लांटेशंस करू छे, आर्टिफिशियल डोम्स बनाउ छे, आर्टिफिशियल लेक्स बने कि सेठी इकोसिस्टम ये करू छे, सेटा को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जोटा को मैन मेड. ओके, नेक्स्ट ecotone is a zone of junction between two or more diverse ecosystem. गोटे जगह रे सपोज एठी लैंड इकोसिस्टम अछि एंड देन ग्रेजुअली एठी हमरा एक्वाटिक इकोसिस्टम अछि.
तो तुम स्क्रीन शेयरिंग बंद है गला स्क्रीन शेयरिंग बंद है ना वेट Yeah, वेट yeah. ହେଲା ନା ଏବେ Yes, ma'am. we have one terrestrial ecosystem या land ecosystem एठी हमर aquatic ecosystem एठी हमर जहाँ भी तमर फॉरेस्ट रहला या आमे माने जहाँ सब रहिलु एठी गोटे जोन एटा हला aquatic ecosystem land ecosystem ए जो ट्रांजिशन जोन जोटा एटा होचे हमर इकोटोन फॉर एग्जांपल हमारा टेरेस्ट्रियल जोन या लैंड इकोसिस्टम रहला तापर एठी समुद्र रहला और एठी हमारा मैनग्रोव्स रहिले ए मैनग्रोव्स गराक बिलोंग करंती गोटे ट्रांजिशन जोन को दैट इज योर इकोटोन बुझा पड़ला समस्त को अब ए इकोटोन रे जो स्पीसीज गराक जनरली आई मीन अबंडेंटली अछंती से मानन को हमें कहबा एज स्पीसीज because एमाने गोटे दीटा इकोसिस्टम रो एज रे एग्जिस्ट करूचंती दैट्स व्हाई दे नोन एज एज स्पीसीज इति मो मैनग्रोव कथा भी लिखि देछि और ग्रासलैंड एस्चुअरी रिवर बैंक्स एगरा को भी अदर एग्जांपल्स देन वी हैव niche is the unique functional role or place of a species in an ecosystem मतलब से जो यूनिकनेस गोटे ऑर्गेनिज्म रो या गोटे फंक्शन रो सेटा को niche कहबा niche आर देयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स that might be our habitat niche food reproductive physical and chemical एथरे जतले गोटे ऑर्गेनिज्म आ गोटे ऑर्गेनिज्म सु डिफर करे जो यूनिक फीचर्स सेटा को हमें निश कहबा and the terrestrial part of the biosphere is divisible into enormous regions known as biomes which are characterized by climate vegetation animal life general soil type एबे मते के कहि पारे बायोम भितरे इकोसिस्टम ना इकोसिस्टम भितरे बायोम इकोसिस्टम भितर बा System. इकोसिस्टम भितरे बायोम काहे की एग्जांपल मु टाइप्स ऑफ बायोम को होची तापरे Hello, एटा ma'am. भी आसी जिवो मैम बायोम अंडर इकोसिस्टम जाउची अच्छा जो गोटे आंसर हला बायोम अंडर इकोसिस्टम जाउची आ गोटे हला इकोसिस्टम अंडर बायोम जाउची ओके आमे एग्जांपल स्टडी करिया तापरे देखिया कोन एक्चुअल करेक्ट आंसर कोटा हला एटा हमरा टाइप्स ऑफ बायोम्स एठी गोटे हला हमें मीन एनुअल टेम्परेचर आ गोटे पटे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन को नेकिरी वी हैव divided the types of we have categorized biomes into different kinds tropical forest एठी सबटु highest amaro annual precipitation and annual temperature gradually we have then the temperate forest then grassland desert arctic alpine tundra au coniferous forest एबे मते एग्जांपल एठी मेंती करी की रखी छी देखो कोल्ड वार्म ड्राई वेट ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वाइज भी डिवीजन हेकरी अछि एबे मते को बायोम भितरे इकोसिस्टम ना इकोसिस्टम भितरे बायोम इकोसिस्टम जो अंडर बायोम्स चलो गुड इकोसिस्टम भितरे फॉर एग्जांपल मु एठी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेली इकोसिस्टम जर बायोम एठी गोटे लैंड भी थिबो लैंड इकोसिस्टम भी थिबो गोटे रिवर भी थिबो जोटा कि हमरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी हे परिबो सो बायोम भितरे इकोसिस्टम्स थाए हैला ओके नेक्स्ट आज एति कि मोर बेसिक डेफिनेशंस थिला नेक्स्ट होची कांसेप्ट पार्ट मु पोल्यूशन सहित पोल्यूशन पढेबी नेक्स्ट क्लास को शायद से मु फूड चेन एंड फूड वेव एनर्जी एटा को मु रखी छी So we'll start with pollution. Pollution is defined as an addition or excessive addition of certain materials to the physical environment, maybe water, air, lands, making it less fit or unfit for life.
निजर नोट्स रे गोटे डेफिनेशन लिखिबा पोल्यूशन रो एंड सेटा एग्जाम हॉल रे एग्जाम आंसर शीट रे भी एग्जैक्टली सेटा को लिखिबो बेसी ज्यादा आगो पछ करी की टाइम वेस्ट करियारो नाही you can follow this definition make your own definition get it from any other books also but got your definition causes of pollution uncontrolled growth in human population rapid industrialization urbanization uncontrolled exploitation of nature forest fires radioactivity volcanic eruptions strong winds etc काको किछि पचरिबार अछि ए पांचटा पॉइंट से किछि आउ अछि बुझिबार नहीं मैडम कहନ୍ତୁ नहीं ना मैम डाउट देखो तो अरे एटा पळेला कि गोटे सेकेंड चलो so now we have first air pollution it is a contamination of air by discharge of harmful substances Subhadra, हाँ somebody is asking biome टा author explain करिया भाई biome ना coach the terrestrial part of biosphere is divisible into enormous regions hala which is called biomes biomes garaka amara characterized by climate vegetation animal life or general soil type we have etiki 7 types of 6 types of biomes eithre a figure a graph anusarare we have 1 2 3 6 types eithre tike adhika types different loka different classifications deichanti a diagrams kariba important किछि आउ के जानियार अछि से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगेन कोठी केमती प्रेसिपिटेशन आउ टेम्परेचर या अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स रे डिफर करूची सेटा को हमें बायोम बोली क्लासिफाई करूचो हे गला आगे जेमती पोलर आउ बहुत हमारा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फीचर्स पूरा डिफरेंट सो पोलर इज अ बायोम tropical rainforest is another biome polar रे भी तार terrestrial ecosystem अछि यार भी terrestrial ecosystem अछि है ना चलो नेक्स्ट में कोर्सली हाँ pollutants are the materials or factors which cause adverse effect on the natural quality of any component of the environment जो हा जोगो pollution होउची pollutants are again of two types primary pollutants secondary pollutants these persist in the form in which they are added to the environment गोटे आ गोटे environment रे जाई करी किछ गोटे reaction भी करूची interaction among the primary pollutants भितरे interaction हे करी secondary pollutants भी होची okay like your peroxy acetyl nitrate pan ये एग्जांपल टा मन रखो एग्जाम रे प्रीलिम्स रे भी आसी पारे कि pan is kind of secondary pollutant or primary pollutant or water pollutant या कोन केमती गोटे आ बाकी रेस्ट ऑप्शंस देखि करबो बट इट इज अ सेकेंडरी pollutant so our pollutants are again of two the particulate pollutants and gaseous pollutants your lead fly ash metallic oxides and nanoparticles एरा को particulate form रे थाए और एरा को gaseous form रे थाए so एगरा को ए छटा को मेजर या को प्लीज मने रखि देबो जेबे भी तमारा को भी क्लाइमेट चेंज हो या किछि भी हो these should be there ए गैस गरा को त थिबो ही थिबो सबुठी तमारा ओजोन डिप्लीशन हो रहिबो एसिड रेन हो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो और बाकी क्लाइमेट चेंज हो एरा का रहबो आल्सो दिस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एथिलीन हमर को थ्रू आछी एथिलीन हमें प्लांट्स तले प्लांट्स बाहर सेटा पोल्यूटेंट काहे की कहिले हमें तब तो प्लांट मार दबा एथिलीन पळेबा पोल्यूशन हबनी मैडम गैसोलिन लो आछू की मोबाइल गैस मैम कोठु आछी गैसोलिन हमें ताकू केते यूज करूचे मैम पेट्रोलियम ओके पेट्रोलियम रु चलो
हम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स रू भी एथिलीन बहुत बाहर है तो प्लास्टिक रो किछि भी बर्न हुए एथिलीन गैस बाहर है दैट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एथिलीन टू आवर एनवायरनमेंट हला नेक्स्ट अब गोटे इंडेक्स रोचे हमर एयर क्वालिटी इंडेक्स वो अन्य भी बहुत नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अच्छी बट दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एज फार आई हैव read and I have माने एग्जाम्स रे भी मु देखि छी एटा से AQI is a number which is a measure of air quality. The higher the AQI, the worse the air. इतरे हमारा कितना कलर्स अच्छी 6टा कलर कोड्स रहुची 6टा कलर कोड्स तारा इंडेक्स रहुची 0 to 50 रो 0 to 500 रहुची एथरे हमारा आमे ताको कैटेगराइज करूछु कि तारा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ता कोन जेंति दिल्ली रो सबटु खराब रहिबो जते बेले से पुअर वेरी पुअर को आसी जिवो अब एटा हमारा स्वच्छ भारत कैंपेन 2014 रे लॉन्च हेतला और सेबेठु हम एपर्यंत चालछु जेंति विंटर्स आसी गले दिल्ली रे बहुत खराब वाला स्मॉग हे जाए स्मॉग कंडीशंस रे तांकर सबु एयर क्वालिटी इंडेक्स बोर्ड्स थाए तांकर बड़ बड़ इंस्टीट्यूट्स या नेशनल मेजर जंक्शंस करा करे सेठी से माने पूरा रेड हाइलाइट करिकिरी तांकर एयर क्वालिटी इंडेक्स कोइठी नंबर रे लिखि देथा AQI एतिकी केबे गोटे ऑब्जर्व करिवो कोठी AQI बोर्ड्स अछि ताको देखिवो केते तार क्वालिटी कोन वेरी पुअर तमे एक्चुअली कोन इनहेल करूचो यू विल नो दैट ओके द पोल्यूटेंट्स मेजर्ड फॉर गेटिंग दिस AQI includes PM10 PM22.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन कार्बन एक्सेट्रा इतकी बेसिक एटा देखिबो है ना then we have water pollution can be defined as the contamination of water bodies हाँ के किछु कोथ लेगे PM10 माने को हेलो PM10 माने को सेटा होची रे पार्टिकुलेट मैटर रो साइज थाए 2.5 10 एमती जति की बड़ होबो सेति की माने सेरा स्मॉग को कंट्रीब्यूट करिवो जते बेले हमरा कुहुडी हुए ना दिल्ली रे तो गोटे पूरा लेयर रो पूरा गैसियस माने ग्रेइश कलर रो दिसे सखाळु विंटर्स रे जोड़ा को हम पई इनहेल करबा ठीक न है आ जते बड़ साइज होबो सेति की हमर लंग्स रे डिपॉजिट हे की रहिबे से माने मैडम एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर केमति करा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स कंप्यूट करंती वेट द गवर्नमेंट तारा कंप्यूट करे ए जो पोल्यूटेंट्स रो रे केते केते अमाउंट अछि ताको ने कि से माने गोटे कंप्यूटेशन माने कैलकुलेट करंती कि एथ्रु एतिकी थिले से 0 to 50 AQI रे रहिबो इंडेक्स रहिबो कि 51 to 100 कि 101 to 200 एमती हिकरी रहिबो मैम गुटे क्वेश्चन थिला हां मैम जो एथिलीन अछि ओजोन अछि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन अछि मैम दुइटा जाको जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट रे काउंट करियो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अच्छा सेरा सेकेंडरी रे जिवो मैम तो बट अगेन प्राइमरी भी हे परिबो नॉट नेसेसरीली मो सेरा फिर भी मो चेक करी कि टिके सेरा कहिबी बिकॉज़ ओजोन O3 फॉर्म रे भी रहुची सेकेंडरी हमर जनरली प्राइमरी इंटरेक्शन रे जोटा बाहरची सेरा को सेकेंडरी हमें कंसीडर करू छे मु सेरा चेक करी कि नेक्स्ट क्लास को कहबी हैला मैम एथिलीन रू जो प्रोडक्ट जो माने कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बाहरची से ओजोन हे जाउची मैम तो एथिलीन जदी सेकेंडरी प्रोडक्ट जदी भी हैला बेले ओजोन भी तो सेकेंडरी हेबा कथा न कोन पे से तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हे जाउची तो सेरा सेकेंडरी कोन कहउछन अपन सेरा सेकेंडरी हबा कथा ना नु है मैम सेटा तो कंफ्यूज होची मैम ना जदी गोटे को भी गोटे पोल्यूटेंट इट माइट बी प्राइमरी इट माइट बी सेकेंडरी कहार गोटे रिएक्शन रो आ गोटे पोल्यूटेंट रेज होची ताले सेटा प्राइमरी ऑब्वियसली नु है एंड इफ इट इज नॉट प्राइमरी ताले सेटा सेकेंडरी you can also name it tertiary but more about the tertiary pollutants as such kuti I have not come across so ame ताको secondary bucket रे ही रखिबा से भी मो टिके फर्दर क्लैरिफाई है कि नेक्स्ट क्लास को कहि देबी सेरा वेदर हमरा टर्शियरी बोली किछि अछि या फिर हमें ताको सेकेंडरी रे ही रखि देबा हैला ओके मैम water pollution is caused when water bodies such as rivers
lakes, oceans, groundwater get contaminated with industrial or agricultural effluents. Our water, clean water and sanitation is a part of objectives of SDG 6. समस्त टिके SDG टा को सब तक SDG को पूरा बड़ा बड़ा ब्लॉक लेटर्स करी कि निज टेबल आगे चिपके देथिबो, because when you write it in your answer कोथरे भी कि SDG 0 रे हंगर गला, SDG 6 रे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अच्छी, it will fetch you good marks कि सेमाने कहबे चलो होलिस्टिकली कवर होउची. खाली वाटर पोल्यूशन रे जदी हमें लिखि दबा एटा तारा कॉजेस तारा मेजर्स सेरा समस्त लिखिथिबे, तम भी लिखिथिबो 10 रु 5 ही पाइबो, तातो अधिका नै. 5+1 पाया को हेले एमती गोटे किछि गोटे एक्स्ट्रा लिखियार अछि. Okay, so United Nations Water Summit on Groundwater 2022 recently Paris रे हेची. सेरा मेजर कंसर्न कोन थिला? ग्राउंड वाटर. Bring attention to groundwater at highest international level. With increasing population and groundwater exploitation, extraction au use सबुठु अधिका होची, because groundwater होची around 99 या 96% of the fresh water available. आमे ये saline water use करी परिबानी. fresh water आमे जो use करछे आमे generally ताकू borewells या groundwater extractions या wells किछि भी करी की use करी दोचे. आम मानक पाखा पाखी rivers अछि, but जोठी नाही सेठी से माने majorly depend करूचंती groundwater reserves उपरे. India is the largest user of groundwater with 1/4 of the total global withdrawal. इटा बहुत बड़ा मेजर कंसर्न गोटे. अच्छा, हमारा इंडिया रे अछि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी which is empowered under the Environment Protection Act 1986 to frame groundwater policies and programs. मझिरे आस्तला ना गोटे ग्राउंड वाटर टा पब्लिक एंड प्रॉपर्टी ना प्राइवेट प्रॉपर्टी. सेटा एक्चुअली तापरे डिसाइड हला कि नै सेटा होची प्राइवेट प्रॉपर्टी हेले तारा एक्सट्रैक्शन ऊपर हमें बार लगे परिबानी. So it was again declared that it is a public property. ठीक अछि. वाटर पोल्यूशन रिलेटेड गोटे अछि हमारा मिनामाटा बे इन जापान. सेठी किछि लोकन को लाइक 2013 प्रायर टू 2013 या केते डिकेड्स हला तांको होतला, से माने से फिश खाइ कि तांको ट्रेमर्स आसुतला, तांका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होतला, से मानकर बहुत सारा हेल्थ इश्यूज दिसुतला. WHO 2013 रे तारा confirmed research सहित आसिला कि this is due to mercury and its compounds present in the सेठिकार aquatic ecosystem रे, जोटा कि सेठिरो aquatic animals fish, shellfish एमानक भितरे बहुत अमाउंट रे मिलुतला. सेट पय लोक मानको ए मेनामाटा डिजीज टा होतला. So in 2013 Kumamoto Japan Minamata Convention Minamata Convention and Treaty to Protect Human Health and Environment sign करा गला. Okay, water pollution रे Minamata Convention is important. गोटे हला हमारा SDG 6 ग्राउंड वाटर एबे रिसेंट जोटा हिची यूनाइटेड नेशंस 2022 पेरिस रे ग्राउंड वाटर सिचुएशन को हाईलाइट करिया को. एंड नेक्स्ट लास्ट लेट तार प्रीवियस होची मिनामाटा कन्वेंशन. ओके, yeah, next we have earth overshoot day. गोटे इवेंट कहितली एटा हला हमारा earth overshoot day. This is marked as the day when humanity has exhausted nature's budget for the year. In 2022 it is on 28th July and 2021 it was on 29th July. And it is calculated by Global Footprint Network, an international research organization. Each year Earth Overshoot Day marks the date when we have used all the biological resources that Earth can renew during the entire year. बुझा पड़ला? Hello? Ma'am, टिके आउथरे कहिबे. So Earth Overshoot Day is the day or is the date when we have used all the biological resources that Earth can renew during the entire year. गोटे year रे 365 days and if it is leap year 366 days. एमती हेकरी हमें केते यूज करू छे से माने गोटे अकाउंट रखी थांती. सेथिरु से माने पूरा गोटे ईयर र बाहर करंती कि ए ईयर र ए डेट रे सब कंज्यूम हे जाउची आउरी बाकी ईयर अछि भी. फर्दर पढू छी बुझा पड़ जिवो.
how is it computed? Earth is computed by dividing the planet's biocapacity, which is the amount of ecological resources Earth is able to generate that year, by humanity's ecological footprint, mean kete demand for that year, multiplying by 365. एमती planet ro biocapacity divided by human demand gote year ro into 365 या 366 लीप ईयर रो जति की नंबर ऑफ डेज सेथिरु से माने बाहर करिवे गोटे डेट जो दिन पूरा वर्षर हमरा रिसोर्स या बायो कैपेसिटी आमे कंज्यूम करि देले स्टिल जदि बुसिल बुझा पड़िबा नै नो 1970 रे सब से माने ईयर राउंड रो गोटे गोटे रखि थांती एमती ग्राफ 1970 रे अर्थ डे थिला डिसेंबर 1 ओके एबे हमरा अर्थ डे आसुची 2022 रे 28 जुलाई तो एथरु कोन बुझा पडुची कोटेला डिसेंबर 1 रे थिला 1970 2022 रे 28 जुलाई एनीवन मैम फार्मूला हिसाब रे जो डेट बाहरुची से हिसाब रे कैलकुलेशन होचे सुना फार्मूला हां फार्मूला हिसाब रे डेट ता बाहरुची से मानकर ओटा फार्मूला अछि ताका सिस्टम रे से माने पके की डेट बाहरुची किंतु या द्वारा इंडिकेट कोन करूची मैम एटा केते इंडिकेट जल्दी करूची रिसोर्सेस गुडा का एग्जिस्टेड हो जाउछ एग्जैक्टली 1970 रे हमर पॉपुलेशन कोन थिला हमर सिचुएशन लिविंग कंडीशंस कोन थिला हमें केते इंडस्ट्रीज थिले कोन थिले से सब बहुत ही कम थिला एज कंपेयर टू 2022 1970 रे अराउंड चलो लेस देन 20 डेज खाली कम पडुतला अर्थ तारा नेक्स्ट ईयर रिसोर्स को हमें जंप करि पटले फुलफिल हे परतला बट 28 जुलाई माने हमरा एते कंजप्शन हमरा रहि जाउची कि अर्थ प्रोबेबली ताको फुलफिल करि पारुनी एंड सेति पय अर्थ ऊपर प्रेशर रहूची एंड दैट इज क्लाइमेट चेंज एसिड रेन हमरा प्लेट टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हीट बढ़ुची सब ही ये यार गोटे गोटे रेपरक्यूशंस ओके फार्मूला टा टिके आउतर बंद फार्मूला होची प्लैनेट रो बायो कैपेसिटी गोटे ईयर रो डिवाइडेड बाय ह्यूमन डिमांड गोटे ईयर रो इनटू 365 डेज सेटा हमें बाहर कर परियानी या हमको बाहर करिया किछि नेसेसरी नु है से माने गोटे से ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एंटायर अर्थ रो 195 प्लस कंट्रीज रो से बसी की डिमांड बाहर करूची तार प्लैनेट रो टोटल बायो कैपेसिटी ता पाखरे अछि सेति की को इनटू 365 करिकी से पूरा हमको गोटे डेट एवरी ईयर दोची so that is their job but ame through indicate कोन होउची सेटा बुझिबा दरकार next time whenever it is asked in your interview also कि अर्थ ओवरशूट डे ऊपर कुहा या फिर तो हमको किछि भी लाइक लेखिया को पड़ला कि एसे रे भी तमे लेखि पारिबो कि अर्थ ओवरशूट डे होउची आगुरु हम एमती होतला एबे एमती हला पोल्यूशन रे एमती इंपैक्ट पडुची या अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइफस्टाइल चेंजेस रा एमती इंपैक्ट रहउची कि हमें बिफोर माने 50% ऑफ द डेज कवर हो ई भीतर हमारा अर्थ ओवरशूट डे आसी जाउची ओके मैम हां मैम अर्थ ओवरशूट डे रो सेंटर एटा इंपोर्टेंट कोन कोन मु कहली जो अर्थ ओवरशूट डे अछि सेलो सीन का एटा इंपोर्टेंट सीन कोन अर्थ ओवरशूट डे सेटा कोन अछि तो सेम ता अछि मध्य तो मैच रो सेंटर एटा इंपोर्टेंट बिना तो करने मते सुबुनी क्लियरली आउथरे टिके भलसे कोंतु मु कहली मैम जो थीम है ना ओवरशूट डे 2022 रो थीम का एटा इंपोर्टेंट बिना तो तार थीम जदी मने रखिबा कोन एवरी ईयर गोटे गोटे थीम बारिबो ताकू सब मने रखिबाटा पॉसिबल है बट जदी रखिबे तो भलो कथा बट एटा को एक्सटेंसिवली यूज करा जाऊ एसे हो
तो हमारा GS3 पेपर्स हो या कोठी भी हो, दिस शुड बी यूटिलाइज्ड. लोक जानिया दरकार कि यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग अराउंड यू. खाली गछ डिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन टू भी बहुत ऊपर को हमें पळेलुनी हैला. ता थीम जानले तो बेटर. जोठी भी अछि आइठी थीम लिखि दे. मु एते थीम एवरी ईयर रा गोटे गोटे थीम जदी थिबो सेटा को हमें निज अकाउंट रे नबा पॉसिबल हबनी. बहुत सारा जिंस बहुत सारा कन्वेंशंस मन रखार अछि. कोटा कोठी हेइथिला, कोटा केमती कोन इंडिकेट करजी, कोटा अपडेट होउची. ओके ठीक अछि. डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी करिबो. Then we have soil pollution. So soil is a thin layer of organic and inorganic materials that cover the earth's rocky surface. Soil pollution is contamination of this soil, addition of substances to the soil which adversely affect the physical, chemical, biological properties of the soil and reduces its productivity. It hamara rahila sources: industrial waste, pesticides, fertilizers and manures, discarded materials, radioactive waste and other pollutants. ये सब बेसिकली सॉइल रा क्वालिटी को डिक्रीज करूछंती, जोथि पई सॉइल रा प्रोडक्टिविटी हैम्पर होची. नेक्स्ट वी हैव वन ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ साहेल रीजन. रिसेंट न्यूज रे थिला. सो साहेल रीजन इज इन अफ्रीका. ए 11टा कंट्री को नै किरी साहेल रीजन तको कुहा जाय समानको. सो कोन एथरे अछि ना हमारा it is an initiative to increase the amount of arable land in Sahel region bordering Africa's Sahara Desert. Hello, audible? Yes, ma'am. बुझा पड़ला? Yes, ma'am. कौन को इंडिकेट करा Yes, जाउचे? ma'am. Africa रो this part is absolutely desert area. एठी तारो ग्रीन है माने एठी तारो एग्रीकल्चरल एरिया या फॉरेस्ट एरिया सब अछि, ग्रीनरी अछि. बट ए जो ट्रांजिशन जो एटा धीरे धीरे ऑब्जर्व करिले कि डेजर्ट ता बेसी बेसी बढ़ी बढ़ी चली छी. तो ताको स्टॉप करिया को से माने गोटे कन्वेंशन तांगर डिक्लेयर करिले कि हमें एम्ति गोटे ऑर्गेनाइजेशन तिनटा को आनिबु. Then we will plan a great green wall that will be a barrier between the deserts and the green world towards the center and south of Africa. That say through desertification ज़्यादा हबनी. And what is arable land? Arable land होचे land capable of plowing and growing crops. Because deserts रे समाने crops grow करी परिबेनी और ए जगह रे population भी काफी अच्छा खासा अछि. तो ताको sustenance पाई भी हमको ग्रेट ग्रीन वर्ल्ड रे समाने होटे कांसेप्ट को आसिले. So 11 nations investing in projects as varied as agroforestry to sustainable development: Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan, Chad, Niger, Mali, Mauritania, Senegal, Burkina Faso, Nigeria. सब कंट्रीज नाम मन रखा दरकार नहीं. Sahel region 11 nations. Organizations involved होची हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी WB, UNFCCD. UNEP has declared it to be one of the pioneering initiatives that are restoring the natural world. आम एबे लैंड डेजर्टिफिकेशन रु लैंड को बचेबार हमारा एबे एजेंडा रहुची. कि मते कहिबे UNFCCD रो फुल फॉर्म? मैम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट डिजर्टिफिकेशन. No. United Nations Convention to combat desertification. Desertification ठीक अछि, तमे ठीक बुझिଛ. That is to combat desertification. हैला? यस मैम. यस मैम. आउ काको किछि पचारियार अछि तरे? एरा करंट अफेयर्स रे भी जिबो. तमारा मेजर्स कोन ग्लोबली कोन मेजर्स निया होची टू कॉम्बैट पोल्यूशन और कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज सेथरे भी जिबो. मते के GEF बिसरे कहिबा? So GEF is Global Environment Facility. इटा गोटे मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट फंड.
इटा गोटे फंड जो थरे जहां अंडर रे अराउंड एबे पांचटा प्रोग्राम्स अच्छी पांचटा प्रोग्राम ये फंड करूची पांचटा फाइनेंस करूची पांचटा इंस्टीट्यूशंस को या कन्वेंशंस को कह गले गोटे हला सीबीडी UNFCCC स्टॉकहोम आज हमें डिस्कस करिया मिनामाटा हमें डिस्कस करी देइचे हला एती ना गोटे कोन छली UNCCD ओके एती मन रखिथिबो GF पांचटा ए पांचटा CBD UNFCCC स्टॉकहोम मिनामाटा CCD चलो नेक्स्ट noise pollution is an unwanted sound that induces terrible discomfort in the ears. The noise about 90 decibels causes auricular weakness and exceeding 100 dB can be permanent hearing loss. The noise pollution causes rahila, then the effects can cause high BP, stress related ailments, interfere with speech, hearing loss and all. That here to numerous effects rahiba. Etra ame jetiki bohi re thila m setiki lekhichi. But numerous effects achi because our lifestyle jogo we are creating more and more kinds of diseases, symptoms and syndromes. Okay. Then light pollution. याकू केतले जण सुनिचंती light pollution विषय रे? Okay, Yes, ma'am. Okay, fine. So light pollution is excessive, misdirected or obtrusive artificial light that obstructs the starlight in the night sky, interferes with astronomical research, disrupts the ecosystems and has adverse health effects and wastes energy. है ना artificial light जोटा कि excessive रहे और misdirected भी रहे starlight राती रो जो light टा उसे obstruct करे. Again, 19.5% of India's population experiences a level of sky glow that keeps the Milky Way out of sight and makes it impossible for human eyes to adjust to the dark. किछि ना किछि रातिटा पूरा राति दिसिबनी से किछि ना गोटे लाइट ऑब्स्ट्रक्ट की रहिबो तुमको लागिबो काइंड ऑफ डार्क ग्रेइश शेडिश रहि ग्रेइश शेड रहिबो सेठी सेटा को स्काई ग्लो कुहा जिवो हमको कुहा जाय. Components of light pollution: glare, sky glow, light trespass और clutter. इरा ଟିକେ important अछि आपको देखिथिबो. I am not sure whether एमती OPSC pre रे पकेबो कि नहे but mains ପାଇଁ ready थिबो. Directly definition पकेबनी but pollutions पकेले you can just write कि light pollution भी गोटे अछि जोथरे कि components तार glare अछि जो कि excessive brightness माने हठात गोटे visual discomfort हे जिवो. Sky glow gote brightening of the night sky जोटा shadish gote रहिबो गोटे shade रहिबो. Light trespass light falling where it is not intended or needed. तापरे clutter bright confusing excessive groupings of light. एते याकू एते elaborately एते deep रे जिबा दरकार नाही. गोटे glare रहिला गोटे sky glow light trespass एंड दी तीनटा लेखि देले भी it is well understood. अच्छा एटा कोन इफेक्ट कोन हमर आखिरे कोन सेल्स और रॉड सेल्स अछि तो एटा एक्चुअली कोन सेल्स को इम्पैक्ट करे. Okay, next we have thermal pollution. Thermal pollution is a degradation of water quality by any process that changes ambient water temperature. A common cause of thermal pollution is the use of water as a coolant by power plants and industrial manufacturers. Industries ru jete bale industries pani naba tama water system ru से कूल करिकरी नहीं गला को कंडेंसर लगेकरी बट पानी को सेमती रिलीज करी देला एटा या टेम्परेचर्स अधिक थाए आ एठी जो हमर वाटर बॉडी थाए तार गोटे मीन एवरेज टेम्परेचर थाए एरी जो फिश या को भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स थांती दे आर यूज्ड टू द नेचुरल टेम्परेचर दैट इज देयर इन दिस एक्वाटिक सिस्टम बट जते बेले गोटे 100 डिग्री सेल्सियस रा पांटा हठात आसिकरी असला इट विल टेक टाइम टू come to this temperature mean temperature को बस एतिकी भीतरे भी बहुत डैमेज हे जाउचे aquatics जो organisms को है ना. Measures to control heated water from the industries can be treated before discharging directly to the water bodies. इधर ताको तमे आउ थरे याकू cool down कराओ तापरे तमे water bodies को छाड़ो या फिर installing cooling ponds आउ गोटे एमती एठी रहला industries
एठी तमरा वाटर बॉडी अछि जोर से पानी निए एठी आ गोटे कूलिंग पॉन्ड बनेबा हमें से कूल हबो तापर एठी के आसीबो इंडस्ट्रियल ट्रीटेड वाटर कैन बी रिसाइकल्ड फॉर डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल हीटिंग या फिर तमे तम भीतर आउथरे ताको यूज करो वाटर बॉडी को छाड़ीबनी और थ्रू आर्टिफिशियल लेक्स जेमती कूलिंग पॉन्ड्स बनिला सेम तमरा आर्टिफिशियल लेक्स बनिला हीटेड वाटर एठी के आसिला ता टेंपरेचर डाउन हला परे फर्दर सेटा सेठी भी आउथरे यूज हे पारिबो Next we have Stockholm Convention. So Minamata Convention हमें देखिले Mercury रहला Minamata. M for Mercury, M for Minamata. Stockholm Convention is a global treaty to protect human health and environment from persistent organic pollutants. POPS या POPs को आ जाए तको. So over 152 countries have ratified the convention and it entered into force in 2004. What are these POPs? The POPs are the carbon-based organic chemical substance that display the following properties once they are released into the environment. एरा काहे कि एते importance मिलेला ताको कि गोटे convention बनेला because it is lethal. Lethal काहे कि ना तार एति की properties अछि that's why एरा lethal हे जाउची. Lifespan यार lifespan बहुत long time पाए for years more than 10 years भी गोटे गोटे POPs र थाए. तापर डिस्ट्रीब्यूशन सबुटी वेल वाइड स्प्रेड यार अछि सॉइल वाटर एयर फूड चेन द फूड चेन रे भी एक्यूमुलेट हे जिबो आराम से फैटी टिश्यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस तापर टॉक्सिसिटी टॉक्सिक फॉर बोथ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ बायो एक्यूमुलेशन accumulated in the fatty tissues and its concentrations get magnified ताको बायो एक्यूमुलेशन हमें कहबा. So the exposure of the POPs can cause cancer. तापर तो disease start हला hypersensitivity हे गला फिर allergies, reproductive disorders, endocrine disorders, immune system रे disruption and all. Okay. So ता ए सब को तरा observe करा हला कि POPs एमते अछि. So we have come to sign a treaty, global treaty to protect the human health that is known as the Stockholm Convention. माते के को Stockholm को country रे हेलो Yes, ma'am. Stockholm को country रे वर्ल्ड मैप टा को ना सबले सामने रे रख खाली खाली एमती थाए ना गोटे गोटे के हमें ओपीएससी प्रिपेयर करचे यूपीएससी प्रिपेयर करचे तो रूम रे गोटे इंडिया मैप गोटे वर्ल्ड मैप समस्त And तरह Sweden. या समस्त Sweden. रूम रे वर्ल्ड मैप इंडिया मैप अछि ना Yes, ma'am. Yes, सेरा ma'am. पढ़ा होची ना सेना वाल डेकोरेशन हे जाईची व्हाटएवर राती रे सोइबा पूर्वरु एटलीस्ट गोटे कंट्री को देखिबो से कंट्री तारो फेमस सिटी से कैपिटल सिटी हेताओ या ता नियर बाय बॉर्डरिंग को कंट्री को से बॉर्डरिंग कंट्रीज इमीडिएटली मने रहिबनी तारो कॉन्टिनेंट तारो से कंट्री रो कैपिटल सिटी ओके एवरीडे गोटे गोटे सो इट इज स्वीडन it focuses on eliminating and reducing the releases of POPs. It sets up a system for tackling additional chemicals identified as unacceptably hazardous. It is बहुत ही ज़्यादा hazardous and lethal. So GEF is the designated interim financial mechanism for Stockholm Convention. मु कही ची पूर्व स्लाइड रे GEF विषय रे सेटा मिनामाटा स्टॉकहोम UNCCD UNFCCC और CBD एतिकी प्लीज मन रख एडा आसीबो ही आसीबो माने एडा आसीबा कथा जदी मु क्वेश्चन फ्रेम करंते ना मु जीएफ त गोटे पके करी पिलांकर मार्क सेइथरे इजीली पिला अचीव करंते then your UNIDO United Nations Industries Development Organization जोरा को सेमान is responsible for supporting developing countries and countries with economies in transition to implement the Stockholm Convention. Other than this there is one more Stockholm Conference which I recently हेथिला. Stockholm Conference is different from Stockholm Convention. Stockholm Convention talks about POPs. आगुरु जतबे Stockholm Convention आस्तिला ततबे 12टा POPS को समान आइडेंटिफाई करिथिले 2014 या केतेरा आई गेस पुणी और 9टा ऐड ही जाईची ओके चलो एते फिगर्स देखिया दरकार नहीं बस मु कहूची कि केमती एटा बुझिया दरकार कि पॉप्स रो कंसंट्रेशंस केमती बढ़ुची एंड केमती इंपैक्ट पकोउची अदर देन अलगा समस्त सेही पोल्यूटेंट्स लिखिबे यू कैन राइट अबाउट पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स
ଆଉ या ऊपर स्टॉकहोम कन्वेंशन हेची सब बळे स्टॉकहोम कन्वेंशन रे याकुला लेखिकिरी पोल्यूशन रे पॉप्स लेखिकिरी स्टॉकहोम कन्वेंशन जदी लेखिबो यू विल फेच गुड मार्क्स चलो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमें डिफरेंट इट इज अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट जोटा होची कन्वेंशन तमरो बट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होची ग्लोबल कन्वर्जेंस ऑन प्लैनेटरी एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस एबे भी से स्वीडिश इनिशिएटिव एबे हमारा स्टॉकहोम +50 हिची अ हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल आवर रिस्पांसिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी काहा को थीम माने रखिया रथिला इटी थीम निया okay so this is the difference between Stockholm Convention or Stockholm Conference এটা তে ইম্পর্টেন্ট বাট মু বি সডনলি মু বি কনফ্यूज হেই যাইতিলি कि कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन ভিতরে সো মু মেনশন कर देली नेक्स्ट वी हैव व्हाट एनिमल थिला चीता री इंट्रोडक्शन रिसेंटली 8 wild African cheetahs from Namibia were recently introduced in Kuno National Park, Madhya Pradesh. Project Cheetah under re. And what is a Project Cheetah? Project Cheetah is world's first intercontinental large wild carnivore translocation project. गोटे कंट्री रु आ गोटे कंट्री को जो बट अगेन ता इकोसिस्टम भी सर्वाइवेबल हबा दरकार माने से एठी जो इकोसिस्टम काइंड अछि पाखा पाखी से इकोसिस्टम हबा दरकार बिकॉज़ चीता गोटे एक्सटिंक्ट स्पीसीज आमे ताकू टेस्ट चेक करिवा चक्कर रे ताकू आमे पूरा हार्म करी कि जीरो को आनले प्रॉब्लम बिकॉज़ इंडिया रे चीता नहांती पार्ट ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट टाइगर रिसेंटली प्रोजेक्ट टाइगर को 50 इयर्स हे गला फंडिंग कोठी से फंड्स फ्रॉम प्रोजेक्ट टाइगर एंड कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा so aim thila introduction of African cheetah because Asian cheetah Indian cheetah amara nahanti extinct he jandi 1952 ru only one large wild mammalian species ebe jota achi amara African cheetah jota asila ebe recently reasons for extinction large scale capture of the animals for the wild for coursing bounty sport hunting extensive habitat conversion decline in prey base जतले फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज करी करी गला अर्बन एरियाज बॉडी ह्यूमन हैबिटेशन बॉडी गला से माने भी तांका पॉपुलेशन भी डिक्रीज हे के गला सो द नोडल एजेंसी फॉर दिस इज NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फंडिंग सुपरविजन एंड हैंड होल्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट से दोची वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी नेशनल इंटरनेशनल कार्निवोर चीता एक्सपर्ट्स भी एजेंसी टेक्नोलॉजी टेक्निकल एंड नॉलेज सपोर्ट दोची So cheetah is nothing but world's fastest land animal capable of running at samaste janchandi it is diurnal they hunt during the day aw emane roar karantini anya big cats porika okay so that's all कार किछि पचारियार अछि या किछि कहयार अछि कि क्लास रो फॉर्मेट एम्ति रखिबा ना चेंज करिया ना बेसी हे जाउची समस्या अछंती ना लाइन रे Okay. कार किछि फीडबैक लाइक फॉर्मेट रे ठीक अछि ना कन्वेंशनल फॉर्मेट दरकार कोन एनीथिंग एनी फीडबैक सर ठीक अछि सर ना आउ इन्फॉर्मेशन बेसी ओवरलोड हे जाउची कि ना मैम किछ ओवरलोड होनी पूरा पॉइंट टू पॉइंट अछि अच्छा फर्स्ट क्लास थिला टिके कम थिबो मत तो कम पॉइंट लागला विथ ग्रेजुअली बहुत आसीबो बिकॉज़ एनवायरनमेंट को हमें इग्नोर करू लास्ट पेपर लास्ट दिन सब्जेक्ट कवर करिया को बसताऊ किंतु लास्ट दिन जते बेले खाली से जो कॉप 19 कॉप 15 आसी जाए ना सेठी हमें कहिया रिवाइज करू ना हमें छाड़ी दो अब सेठी दीटा तीनटा क्वेश्चन तो आसी ही जाए जोटे के हमें अटेम्प्ट भी हमें भूल ही कर दे के आसु ओटे गेस मारी दो ओके सेट पाए आगो एनवायरनमेंट कवर कर दबा था मैम मैम सर किछि सोर्सेस कोन कहली आपण जो पीपी मु पीपीटी बनै छी मु पीपीटी बेसिक सोर्सेस रु ही करची किछिटा मु फिगर्स नै छी एनसीईआरटी रु बायोम्स रो से ग्राफ टा मु एनसीईआरटी रु नै छी से ग्राफ टा को प्लीज समस्त देखिबो एनसीईआरटी बुक्स रो जति की डायग्राम्स अछि सेरा देखिबो बिकॉज़ दैट इज द बेस्ट सोर्स जो टू क्वेश्चन उठी पारिबो कि सबुठ ऊपर कोटा माने ताको बुझिबा को चेष्टा करो सब जिंस मने रजिस्टर करा दरकार नै बुझि जाओ एमति ओटा मैप पड़ी जिवो सेटा मु देखौ छिरवा
मैम रिसेंटली जो न्यूज रे जदी एनवायरमेंटल रो आसीबो क्वेश्चन सेडा क्वेश्चन पड़िबो कौन कौन रिसेंटली माने जो रिसेंटली न्यूज माने रिलेटिव आसीबो एनवायरमेंटल साइंस रो क्वेश्चन इछि आसीले किछि भी सेरे एवरीथिंग एनवायरनमेंट अंडर द सन जहां भी से माने पके परिबे तमे कोन क्वेश्चन हॉल रे बसी की कहबो कि सर तो आसी नतला सिलेबस रे नथिला मासे तळर न्यूज कहि परिया कि हमें मैम हमको मैम 100% आसीबनी बट वी विल गिव 100% टू कंप्लीट द एंटायर आंसर शीट मैम जो क्वेश्चन टा आसीबो सेही रिलेटेड जदी आपण माने किछिटा क्वेश्चन जदी क्लास रे कहि पारंदे त माने बेसी टिके इफेक्टिव होंदा गोटे गोटे जिंस करे हां गोटे जिंस कहबी सी हमर कोन इंटेंशन ना लाइक वी हैव थॉट कि बहुत क्रिस्प आमे गोटे रिफ्रेशर वाला गोटे किछ करिवा राइट सो ऑल सब्जेक्ट्स जेमति एटा लाइक इट वाज प्लान कि 8 to 10 सेशंस रे ओवरऑल टचिंग एनवायरनमेंट सब पार्ट इंपोर्टेंट बट इमिति नाही ईच एंड एवरी पॉइंट तो कले तो 25 टा क्लास हे एटा पॉसिबल होबनी सो 8 टा 10 टा क्लास रे ओवरऑल माने ब्रीफ ब्रीफ करी कवर करा प्लान तो परे हम देखिबा राइट एज पर रिक्वायरमेंट दरकार हमें तमे कहू छ आंसर राइटिंग इट विल बी प्रॉब्लम मेंस आंसर राइटिंग करले वी कैन डिस्कस दोस पार्ट्स राइट एठी जदी करबा ना सेशन टा 25-30 टा क्लास चलिबो 10 टा क्लास सरीबोनी 8 टा क्लास सरीबोनी ना तो दैट इज द आइडिया एक्चुअली हमें जो स्टार्ट भी करथिलो हम एआई डिस्कस करथिलो कि विल माने सब सब्जेक्ट्स हम ब्रीफ ब्रीफ कवर करिवा ताकि गोटे ब्रीफ गोटे रिफ्रेशर वाला हे जो माने हां माने पूरा ब्रश अप हे जाऊ आगो हां तापरे ब्रश अप हे लेखिबा जदी न जानि कि स्टार्टिंग मु आंसर राइटिंग रो कर देबी केते बही खोली कि गूगल करी कि आंसर लिखिबे निजे गोटे मुंडरे जिंस जरा फैक्ट्स फिगर कांसेप्ट रहिला यू विल राइट योरसेल्फ स्टार्ट राइटिंग आंसर योरसेल्फ विल सेठी प्लान मु इवैल्यूएट करिवि आपर वी कैन जदी दरकार प्रीलिम्स रो टेस्ट सीरीज वगैरह हमें प्लान कर परिबा एनवायरनमेंट रिलेटेड किसी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कर परिबा कि आंसर राइटिंग जदी मेंस रो देन विल प्लान राइट फर्स्ट तो इटा सर जाऊ देन विल सी एज पर माने जहां हां तमरो एज पर डिमांड्स आप कहिले हमें से आंसर रे प्लान करिबा आंसर राइटिंग फॉर मेंस विल डू ओके इकोनॉमी रहउची हमर बहुत पिलांगर वीक पार्ट सेटा मु तो इनफैक्ट कहबी मोर भी गोटे वीक पार्ट सेटा मु दे जदी ए वर्ष आपने देई थांती एबे एटा बहुत बेसी टिके मैग्निफाई हे जियो बिकॉज़ जीएस3 रे पूरा आसी गला GS3 तमरो एग्जैक्टली सेपरेटली आसी गला तो आउ पूर्व कोन सब जीएस2 से मिसी के आसे तो बहुत अलग आंसर तमरो आईआर थाए एबे कोन पूरा अलग ही फोकस रहइबो आसीबो एटा सेपरेट इकोनॉमी एनवायरनमेंट साइंस टेक अलग ही आसीबो तो ए तीनटा को इंपोर्टेंस बढ़ी गला तो बेसिकली सेहित पय इफ अगो ए सेशन गरा को सरू ए ब्रश अप रिफ्रेशर कोर्सेस गरा को सरू वी कैन प्लान फॉर वन आंसर राइटिंग मॉक टेस्ट या आंसर राइटिंग मॉड्यूल्स किछि गोटे हमें प्लान एनीथिंग एज पर तमरो क्रैश कोर्स दरकार कि आंसर राइटिंग दरकार सो देन वी कैन प्लान नेक्स्ट ले एंड कर दो लाइक आई थिंक काफी लेट लेनी या गेट बदलनी सो 11 विल ही एंड थैंक यू श्योर सुभद्रा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू सर थैंक यू मैडम थैंक यू Thank you, sir. Good luck, Thank you, ma'am. थैंक यू मैम